Okay, hello guys. I hope I'm audible. Okay, so I think that the technicals are working fine. Okay, let's wait for 2 minutes and then we get started with the session. Okay, guys. I hope the audio is fine. Okay, so I think सुनाई दे रही होगी आपको आवाज. चलो, so let's get started. Okay, good enough. Okay, so guys, this session today is on tenses, concepts, and questions. Now, the reason why why I have kept this session is because this is one of the most important topics I believe on the grammar section. And the biggest challenge for most people is that how to actually prepare this topic, because we have all those books of grammar, but then but like we realize that okay, it will take us many hours to actually complete. Now what I've done is this: I've compressed all the important concepts in one PPT. Okay, and we're going to like have this session for around 1.5 hours to 2 hours. Okay, and if you watch this session from the starting till end, okay, I can assure you that you will cover all the most important concepts that you have on tenses. Okay, और जो मेरा next session है, ठीक है, where like I pick up those specific questions from the chapter tenses. Okay, I would specifically be targeting those questions that we have on ZAT and SNAP, and for that the theory base is very important. ठीक है, तो पहले मैंने सोचा कि यार क्या करें, because I realized that a lot of people don't have a good theoretical background as far as this topic is concerned, tenses, right? And I think most of you have encountered this problem, like unless you understand this topic tenses, you don't find yourself very confident in many of the questions that we have on the grammar section. So guys, with that thing in mind, like we have this session, and I want you to to be participative. Like as we go through the session, you can ask questions. In the first half of the session, we look at some of the concepts. Okay, so we have present tense, past tense, and then we move on to the conditionals. Most questions that we have on the tenses are from either present tense or past tense, and then we have questions from conditionals. Okay, तो तीनों चीजें हम लोग देखेंगे. And after every topic, after every subtopic, I would say we cover, we do some questions, right? Okay. Okay, thank you Nachiket for confirming the audio is great. Okay, so let's get started. Okay. Okay, so guys, this is what my profile is. So my name is Himanshu. I have an MA and MPhil in English Literature. I have 11 years experience of training for CAT, and I have a 99.74 percentile on the verbal section of CAT 2016. So guys, this is what the agenda of the session is. We cover the concept of tenses. We look at the strategy for how we go about preparing tenses, and then finally we pick up questions from tenses. ठीक है? और जो questions वाला part है वो बहुत important है, because in these questions we actually see how these questions are getting solved. Right. I hope you follow us on YouTube and Telegram, and if you don't, okay, you can always follow us. So, guys, this is an important message. Now, I think many people have used the free code. Okay, so this is the code that you have on the screen. When you use this code is basically used for two purposes. For those people who are writing CAT 2020, okay, so now those people can use this code and get access to the
free content that I've put on the app. Okay, so a lot of people are using the free content. Okay, if you do not follow me on the app, I would obviously say that you follow me on the app also, because a lot of content, free content is available there. Okay, so this is one reason why you can use this code. You can use this code and get that free content. Second is that if you are someone who's planning to write CAT 2021 and like you have 1 year का preparation ahead of you, then you can use this code and get a 10% discount. ठीक है, so अगर आपका plan है कि भी आप लिख रहे हो exam and you are planning to write this exam because you are like you're looking at CAT 2021, and then you can use this code and get a 10% discount. Okay, so the fees will go down from 17,500 to 15,750. Okay, similarly you can use this code for the 2 years plan also. Okay, so these are the two purposes. Even if you want to unlock the free content, that is the code that you can use. Okay, so guys, let's get started with the chapter. Okay, so tense. So what is basically a tense? Tense is nothing but a form of verb. Okay, so when you say tense, okay, tense is nothing but a form of verb. So you have V1, V2, V3, V4, V5. Each of these forms of verb has a particular role to play in English, right? And the role is that it tells you the timing of the action, it tells you the degree of completion, and the current state of the action. That means complete हो गया, incomplete है, चल रहा है, right? Okay, so the moment you look at the verb form, you quickly realize the state of the action. You also realize the time of the action. Okay, so the very first thing, tense in itself is nothing but a verb form, and the role of tense is to tell you the degree of completion of an action, the time of the action, and after looking at the verb form, we can definitely say that okay, this action is complete or incomplete or regular action, or it's happening at intervals. So we get answer to all those questions. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो क्या है, that most of us are not very good with identification of tenses. Like we look at a sentence and we don't exactly know ये कौन सा tense है. Sometimes we know the tense but then we don't know exactly in which situation, which context we use that tense. ठीक है, so आपकी problem कुछ भी हो सकती है. Maybe your problem is that you know how to identify a tense but you don't know the context. या आपकी problem ये भी हो सकती है कि आपको context तो पता है लेकिन आपको पता नहीं कि उस context में कौन सा tense लगेगा, right? So so let me start from the very first tense that we have, that is present indefinite. अब guys देखो present tense में the very first like the subtype that comes is present indefinite, right? Present indefinite is nothing but the V1 form of the verb. Okay, so first question मैं आपको यहाँ पे solve कर देता हूँ. When you look at present indefinite, the very first thing you see is a V1 form of the verb. V1 form मतलब base form. ठीक है, now there are three forms of the verb. ठीक है, क्योंकि V4 और V5 तो derived forms होती हैं. The three forms that you see, the very first form that you see is the base form, and that is called as the present indefinite. You can do one more thing with present indefinite. You can actually attach V1 with SES. Okay, and still you have V1 plus SES. It's nothing but the singular of V1. ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द वर्ब गो में आपने SES अटैच कर दिया तो इट बिकम्स गोज. ओके, सो गो इज V1 and goes is nothing but V5. ठीक है, so the thing is that when you have V1 or V5 form of the verb, okay, the tense that you're talking about is present indefinite. ठीक है, तो ये चीज तो हमारी क्लियर होगी. How to identify present indefinite? You look at the verb. Okay, if the verb is V1, okay, then the sentence is present indefinite. If the verb is V5, then the sentence is present indefinite. Okay, so that is one thing. Now the second question is, where do I use V1, where do I use V5? क्योंकि ये चीज तो अभी हमें identify हो गई that V1 and V5 is present indefinite. Where do I use it? Okay, so these are the context in which present indefinite V1 or V5 is applicable. Just pay notice to this. Whenever you see there's a regular action or habitual action, आपने कोई action देखा जो regular या habitual nature का है, you have to use V1 or V5 depending on the subject. Okay, for example, you look at this sentence, I go to the college. तो इस sentence में देखो go क्या आ रहा है. This go is basically nothing but V1 form of the verb. Okay, and we know that I have used this word every day. ठीक है, so this is the adverb of time. Okay, so यहाँ पे मैंने every day use किया है. So every day का मतलब आप रोज जा रहे हो. So this is a regular action, and you can always identify such words like every day, okay, regularly, and the moment you see these words, okay, so second sentence में you have regularly. Okay, तो यार obviously regularly आ रहा है तो उसका मतलब that means it's a regular action, and because it's a regular action you can see that again I have used the V1 form of the verb attend. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका V1 form आ रहा है.
Okay, so in both the actions, they are regular actions, and I can see that I've used the V1 form of the verb. Okay, and V1 form of the verb is used for regular actions. Look at the third sentence. Okay, so both the sentences we have used V1 form of the verb. V1 form means regular action, so that is what present indefinite is. And when the action happens in a regular manner, consistent manner, or at regular intervals. Okay, regular intervals का देखो meaning क्या हुआ? There is an action that repeats after every 10 hours. Okay, every 10 hours के बाद वो repeat होता है. ठीक है, तो ये जो है आपका जो continual जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, okay, it's a continual like something that is happening on a continual basis. That means it's repeating at regular intervals of time. तो वहां पे भी आपका V1 या V5 आता है. ठीक है, तो गाइज ये समझ में आ गया. ओके, और देखो मैं सेशन का जो पेस है मैं इस तरीके से रखूंगा सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग इन लाइक 1.5 to 2 hours. Right. Okay. So I want you people to just pay notice to everything, and I'm looking at the chat. So कोई भी confusion होता है, so you just drop me a like message. Okay, I would reply you to that. ठीक है. So next पे आते हैं universal truth, guys. Universal truth. Now there are some truths that are universal in nature. अभी universal truth क्या होता है? So for example, the sun rises in the east. So we all know that this is a fact. Okay. So this is a factual information. It's a universal truth. Okay. Every action has an equal and opposite reaction. ठीक है. So this is again a universal truth. Now we can see that in both the cases the verb form is V5 और V1. ठीक है. अभी यहाँ पे ऊपर वाले के अंदर rises है. Rises का कौन सा फॉर्म होता है? V5 फॉर्म है. V5 is nothing but V1 plus SES. ठीक है. So अभी भी हम we have discussed that in the present indefinite we use V5 और V1 फॉर्म. ठीक है. V1 आपकी बेस फॉर्म है और V5 is nothing but V1 plus SES. सेकेंड वाले के अंदर देखो हैज आ रहा है. अभी कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर हैज V1 फॉर्म कैसे, तो मैं उसको देखो एक चीज समझा देता हूँ. एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका जो वर्ब हैव है, ठीक है, हैव का V1 फॉर्म हैव होता है. ठीक है. सेकंड फॉर्म आपका हैड होता है. ठीक है. और V3 इसका हैड होता है. ठीक है. V1 के अंदर जब सिंगुलर आप इसको बनाते हो तो हैव का सिंगुलर क्या बन जाता है? हैज. ओके, सो यू कैन कॉल इट V1 plus SES और यू कैन कॉल इट V5. ठीक है, एक ही बात है. तो दिस has is nothing but V1 slash V5. Okay, some people can say that this is V5, some people can say this is V1 plus SES. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है. V1 V5 सब में लग रहा है. ओके, और हमारा सेंटेंस बन रहा है. ओके, नाउ गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट. प्लान्ड एक्शन इन द नियर फ्यूचर. अब यार देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया. अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक नई चीज आ गई. प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक नई चीज आ गई, एंड दैट इज समथिंग दैट इज प्लान्ड एक्शन इन डेफिनेट फ्यूचर. ओके, प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर. अब ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आई थिंक यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे. अब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया. Let us take a sentence. Let us take a sentence of a planned action in near future. Now, if I take an example of a planned action in near future, let me write this sentence. We start a new batch tomorrow. Okay. The sentence is we start a new batch tomorrow. Okay, we start a new batch tomorrow. Now some people will ask me that sir, can we say we will start a new batch tomorrow? ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि क्या हम कल से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं. we will start a new batch tomorrow. So guys, let me tell you that when it comes to scheduled actions, अभी आपने क्या बोला? The new batch is scheduled to be starting, like है ना, it's like it's already scheduled कि कल से start हो रहा है. So whenever there's a scheduled action, it is always preferable to use V1 or V5. Okay. When there is a scheduled action, it's always better to use V1 or V5 rather than your future indefinite. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस आप यूज करोगे तो फिर वो प्रोबेबिलिटी बन जाता है. शेड्यूल्ड एक्शन में प्रोबेबिलिटी नहीं होता, शेड्यूल्ड एक्शन पक्का होता है. ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद वन मोर एग्जांपल ऑफ व्हाट इज शेड्यूल्ड एक्शन. ओके, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर एज टू हाउ यू हैव टू लुक एट थिंग्स. सपोज जैसे मैंने आपसे कहा द ट्रेन leaves. Okay, the train leaves at 6 p.m. Okay, the train leaves at 6 p.m. Let's say tomorrow. Okay, the train leaves at 6 p.m. tomorrow. Okay, now this is a scheduled action because यहाँ पे देखो मैंने 6 p.m. दे दिया और tomorrow भी दे दिया. अभी मैं यहाँ पे बोलूँगा the train will leave at 6 p.m. तो this will leave will create a problem. पता है क्यों? क्योंकि फिर ये probability बन गई. Future tense is not 100% पक्का वाला चीज. Future tense is just a probability of something that can happen in future. So guys, the best is to actually go in for what we say the V1 or V5 form. That will make
the sentence in present indefinite. So the answer is going to be the train leaves at 6 p.m. Right? Okay. Scheduled action of the future is also covered by present indefinite. When you have a scheduled action, that is also covered by present indefinite. Look at the sentence. He leaves tomorrow. That means this is something that is scheduled. So when you say he leaves tomorrow, okay, so that is a scheduled action, and scheduled action again is covered by V1 or V5. Okay, idioms and quotations. All the idioms and quotations that you have in English are also written in V1 or V5, that is present indefinite. जितने भी आपके दुनिया भर के idioms and quotations हैं, जितने भी idioms and quotations हैं, all those are also written in V1 or V5. For example, birds of same feather flock together. Now you can see this verb flock. Okay, so this flock is V1, and you can see that this sentence is in present indefinite. A bad workman quarrels with his tools. Okay, what is the meaning of this idiom? When you don't know a job, you always find problems with the tools you have. ठीक है, तो आपको जब कोई काम नहीं आता तो आप जो चीजें होती है उसमें आप कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालते हो. So you can look at the second example, a bad workman quarrels with his tools, and you realize that quarrels is again V5 form. Okay, so this V5 form is again a sentence in present indefinite. Okay, so idioms and quotations are also written in your present indefinite. Okay, newspaper headlines and sports commentary. Okay, so whatever newspaper headlines and sports commentaries you have, they are also written in V1 or V5. For example, Shinzo Abe arrives in India. PM declares demonetization. Virat strikes a century again. So guys, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. You are talking about a sports commentary or a newspaper headline. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे ना एक चीज समझना. न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती हैं. Whatever newspapers you have, there are reports. ठीक है. अब ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, न्यूज़पेपर के अंदर जो रिपोर्ट्स आती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों होती है? क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली आप ये नहीं कह रहे कि वो पास्ट टेंस में हो चुकी है या फ्यूचर में होने वाली है. This is basically a way in which newspaper headlines and sports commentary are normally written. Okay, so just don't think about those aspects कि यार ये तो पहले हो चुकी है या आगे होगी. Okay, you have to understand that as far as newspaper headlines and sports commentaries are concerned, the chosen ways of conveying the message is V1 or V5, that is present indefinite. Okay, so just keep that thing in mind. अभी एक confusion और होता है historic past का. Look at this example, fantastic example. Maharana Pratap now draws his sword. Maharana Pratap now draws his sword. ठीक है. अब यार ऑब्वियसली महाराणा प्रताप ने स्वॉर्ड को ड्रॉ किया तो अभी तो नहीं हो रहा होगा ना. कोई पूछे कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो मतलब वो चीज रेगुलर एक्शन है या अभी हो रही होगी या होती होगी. ठीक है, या हैबिचुअल एक्शन होगी. तो यार ये कैसा सेंटेंस सही हो गया? ठीक है, तो यार इसका फंडा देखो क्या है. What happens that when you narrate a historic event, okay, when you narrate a historic event, you while narrating the historic event, and you want to make that narration impressive. Okay, this is actually correct to write the sentence in present indefinite. Now it might look very odd. ठीक है, क्योंकि आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार ऐसे लिखो ना, महाराणा प्रताप drew his sword. महाराणा प्रताप drew his sword. ठीक है, and the reason you will give is that sir drew जो है वो second form है. Second form मतलब past indefinite. Past indefinite मतलब an action that happened in the past. Second form लिखो. Okay, so guys, second form is also correct, but when you're narrating the incident, this is also correct. Okay, Maharana Pratap now draws his sword, so you can see draws. Draws is your present indefinite, basically V5 form of the verb. So इसको wrong मत कर देना, ये भी सही होता है. ठीक है. So when you have narration of a historic event, you can use V1 or V5 depending on the subject. Present indefinite, that is not wrong. Okay. Present continuous. Present continuous, only 2-3 things. Okay, nothing detailed. देखो, in present tense, the most important parts are your present perfect and your present indefinite. And then obviously present perfect continuous is also ठीक ठाक important. Okay, present continuous में से आपको ज़्यादा questions नहीं देखेंगे. There are only 2-3 things that you have to notice in present continuous. Okay, so I'm just taking you through those 2-3 things, and just pay notice. If you have any question, you can ask me. Okay. First of all, how to identify present continuous? कैसे identify करोगे आप? How do I identify present continuous? See, this is what happens. When you see is MR plus V1 plus ing in the sentence. Okay. The moment you see is MR plus V1 plus ing in the sentence, you know that this is a sentence of present continuous. ठीक है, तो वो problem तो अब हट गई कि कैसे identify करोगे present continuous is MR plus V1 plus ing form. Where do you use present continuous? Very simple. Okay. Okay.
यस नचिकेत, हिस्टोरिक पास्ट इज यूज्ड इन प्लेस, एग्जैक्टली, ठीक है, नरेशन वगैरह कहना ना हम लोग V1 V5 यूज कर लेते हैं नरेशन के टाइम पे, ठीक है, तो बहुत बार ना एग्जाम में आ जाता है हम लोग उसको रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना बस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में गाइस सबसे पहला जो चीज है वो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING है, आइडेंटिफाई हो गया, एक पार्ट खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज इट डिस्क्राइब? इट डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन और एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है, तो जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग राइट नाउ, राइट, तो बड़ा सिंपल सा है, आपने बोला आई एम स्टडिंग नाउ, सो व्हेन यू से आई एम स्टडिंग नाउ, दिस एम स्टडिंग इज योर ongoing action. When I say he is watching TV, okay, is watching is an ongoing action. Okay, so this ongoing action is covered by present continuous. Okay, so that is one thing. Then you also cover present continuous के through actions that are happening or going on in present but not necessarily right now. ठीक है, अभी इसका मतलब पता है क्या है? For example, when I say what are you doing these days, आजकल क्या कर रहे हो, आपने बोला I am preparing for CAT. So it's not like you're preparing for CAT right now. अभी ऐसा नहीं है कि अभी 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 पढ़ ही रहे हो, ठीक है, but in general you're doing this thing these days. So there are certain things that you do in general these days, but then you're not necessarily doing that thing right now. तो ऐसे जो actions होते हैं ना where you are doing something these days, आजकल अभी ये चीज चल रही है but अभी नहीं कर रहा, ठीक है, those actions are also covered by present continuous, so that is also something that can happen. एंड दिस इज अगेन गाइज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा था, प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर, प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर, अभी हमने क्या पढ़ा था, दैट प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर इज कवर्ड बाय V1 और V5, ठीक है। नाउ प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर कैन आल्सो बी कवर्ड बाय प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दैट मींस V1 इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। ओके, सो या भूमिका, आई कैन सी योर क्वेश्चन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल, ठीक है, और जो आपने एग्जाम्पल दिया ना उसी को एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एंड दिस विल बी परफेक्टली क्लियर। तो देखो यार, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, whenever there's a planned action, okay, planned action कि फ्यूचर में ना कोई एक्शन प्लान्ड हो गया, पहले से ही पता है कि ये होने वाला है, पहले से ही पता है, तो उसमें ना कभी भी फ्यूचर टेंस यूज मत करना। whenever there's a planned action, okay, planned action is always conveyed best by either present indefinite, that is V1 slash V5, or present continuous, ठीक है। तो गाइज whenever there's a planned action, whenever there's a planned action, कोई एक्शन आपने प्लान कर लिया कि फ्यूचर में होने वाला है, that action should be written in V1 or V5 or it should be written in present continuous, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास सेंटेंस है वो क्या है, आई एम लीविंग फॉर मुंबई टुनाइट, आई एम लीविंग फॉर मुंबई टुनाइट, अभी ऑब्वियसली यार प्लान्ड एक्शन है, आपने अभी डिसाइड कर लिया ना कि कल आप निकलने वाले हो, सो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई से ही इज अराइविंग टुमारो, सो दिस इज समथिंग दैट इज 100% going to happen, okay, so this is again an action that is already planned to happen, so this is your present continuous। अब मैं ना यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देता हूँ, एंड आई लाइक आई हैव गॉट वन क्वेश्चन एंड आई वुड टेक दैट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास किसी भूमिका का क्वेश्चन है, तो आई वुड एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो देखो यार, अभी ना एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि प्लान्ड एक्शन आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द एक्शंस वेयर द टाइम इज ऑलरेडी मेंशन्ड, मोस्ट ऑफ द एक्शंस वेयर द डे इज ऑलरेडी मेंशन्ड कि कल से ये चीज होने वाली है, ओके, 6 o'clock से ये चीज होने वाली है, those actions are put in the category of planned actions, that is one thing। Second, when you talk about a planned action, why we cannot write a planned action in future tense, because guys you have to understand something that future tense is nothing but a probability। जब आपकी कोई चीज श्योर शॉट होती है ना, ठीक है, कि आपको पता होता है कि यार ये चीज तो होके ही रहेगी, ठीक है, okay, so that is not a probability, right? Okay, planned action is not a chance event, planned action is a sure shot event। When you have something that is sure shot, write it in V1 or V5, that is present indefinite, or write it in present continuous, that is mr plus V1 plus ING form, right? ठीक है, तो इन दोनों में से चूज करना, फ्यूचर टेंस को चूज मत करना प्लान एक्शन के लिए। तो देखो यार, हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई हैव दिस क्वेश्चन, ओके, सो द क्वेश्चन इज दिस, द ट्रेन इज लीविंग एट 6 PM tomorrow, okay, the train is going to leave at 6 PM tomorrow, okay, so which of these is sentence is correct, okay, actually दोनों correct है, ठीक है, मैं आपको ना देखो समझाता हूँ इसका फंडा क्या है। let me take this example, okay, so Bhumika has asked this question and let me explain this example। So this is the first sentence, the train is leaving at 6 PM tomorrow, ठीक है, ठीक है, so 6 PM tomorrow, that is the first sentence।
द ट्रेन इज लिविंग एट 6 PM टुमारो। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि यार इसमें 6 PM दिया हुआ है। 6 PM का मतलब टाइम आपने डिफाइन कर दिया, प्लान्ड एक्शन है। टुमारो दिया हुआ है, आपने उसकी डे मतलब आपने दिन भी बता दिया कि कल होने वाला है, प्लान्ड एक्शन है। अभी मैं आके चेक करूंगा कि प्लान्ड एक्शन है तो V1 या V5 होना चाहिए या फिर ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यस भूमिका, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज लिविंग मतलब आपका वो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING का फॉर्मेट आ गया। सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, so no problem in this sentence is correct। Okay, so this sentence is correct। ठीक है, now there is one more sentence that she has asked। Okay, and like let's look at that sentence also। Okay, so this is the second sentence that we have। Okay, so the sentence is this: the train is going to leave at 6 p.m। the train is going to leave at 6 p.m। ठीक है, अभी एक सेंटेंस है। अभी तुम्हें एक चीज पता है, आई डोंट नो इफ यू नो दिस इज द मेन वर्ब। ओके, एंड दिस इज द सेमी वर्ब इन्फिनेटिव। ठीक है, this is basically what you call as the semi verb। Semi verbs basically are like partial verbs, they act like verbs, and you can have one main verb and one semi verb in the sentence। In a lot of books you call them non finite verbs। ठीक है, तो तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, उन पे टेंसेस के रूल अप्लाई नहीं करते। टेंसेस के रूल अप्लाई करते हैं मेन वर्ब्स पे, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फंडा क्या होता है कि वो मेन वर्ब्स को अकम्पनी करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई लाइक टू स्टडी। तो मैंने इसे आई लाइक टू स्टडी, द लाइक इज द मेन वर्ब, टू स्टडी इज द इन्फिनेटिव। तो तुम्हें ये चीज समझनी है, अगर किसी को कंफ्यूजन था, दैट अ सेंटेंस कैन ऑलवेज हैव वन मेन वर्ब एंड वन नॉन फाइनाइट वर्ब, which many books say are the semi verbs or non finite verbs, कुछ भी कह लो। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ना, सबसे कॉमन वर्ब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो होती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के ऊपर तुम्हें कोई फंडे नहीं लगाने टेंसेस के, यू हैव टू जस्ट लीव इट एज इट इज एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल द फंडास ऑफ दीज टेंसेस ओके ऑन द मेन वर्ब। तो भूमिका इसमें ना जो मेन वर्ब है ना वो गोइंग है, तो गोइंग के साथ अपने को डील करना है। तुमने उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख ही दिया, तो ये सेंटेंस भी सही हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी सही हो गया, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब पे तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सब्जेक्ट का या टेंस का। ठीक है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दिस कंसेप्ट। अगर किसी को नहीं पता था तो ये कुछ मैंने नई चीज बताई। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। So guys, this is one। Okay, now moving on to the present perfect। So we have seen present indefinite, we have seen present continuous, and now we move on to present perfect। ठीक है, present perfect और present continuous के बाद we start with the questions। Okay, so present perfect का यार देखो फंडा क्या है। present perfect का फंडा देखो क्या है। present perfect में ना सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि जो verb है ना, उसको पहले आइडेंटिफाई करना कि वो एक्शन है कि नॉन एक्शन है। अभी ये एक्शन और नॉन एक्शन जो वर्ब है ना, इसको आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, आई विल टेल यू। ओके, आई विल टेल यू, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस प्रेजेंट परफेक्ट का होल आइडिया इन लाइक 10 minutes 10-15 minutes, but I would cover all the important aspects of what we have in present perfect। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का जो सबसे पहला रोल होता है, दैट इज दैट इट टॉक्स अबाउट द रीसेंट कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। राइट, एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लुक एट दिस बी वाला एग्जाम्पल, I have solved all the problems। So if you see, look at this example, इसमें मैंने लिखा है have solved। ठीक है, have solved। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये जो एक्शन है ना, ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। ओके, अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट रोल पे आऊंगा, लेकिन अभी जो इसका सबसे कॉमन रोल होता है ना, वो देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैं बोल रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई काम अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, recent completion of an action is shown by present perfect। and what is the usual format of present perfect? Present perfect का usual format is has have plus third form of the verb। तो जैसे ही तुम्हें सेंटेंस में has have के साथ v3 दिखता है ना, you know that this is present perfect। the moment you see has have plus v3, okay, you know that this is definitely present perfect। and the most common function of present perfect is to show the recent completion of an action। right, recent completion of an action। आपने कहा आई हैव रेड ऑल दी बुक्स, तो व्हेन यू से आई हैव रेड ऑल दी बुक्स, दिस हैव रेड इज रिसेंटली डन। ठीक है, रिसेंटली डन। तो आई हैव रेड ऑल दी बुक्स, हैव रेड इज अगेन हैव प्लस v3, and have plus v3 is again your present perfect। okay, so that is one role of present perfect। okay, so one role of present perfect is that it talks about the recent completion of an action, and recently when the action completes, okay, we use present perfect। uh, The second function of present perfect is when the action is not complete, but the time
of the action is complete. ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है, look at this example that you have on the screen. Look at this example. I have lived in Jaipur for 20 years. ठीक है, and compare this example with the previous example that I have done. I have solved all the problems. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की है, एंड इन दिस केस ऑल्सो आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 20 years. ठीक है, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स. क्या मुझे कोई जल्दी से बता सकता है कि व्हेन आई से आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 20 years, जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट मैंने यूज किया है, व्हाट डू यू थिंक इज द मैसेज ऑफ दिस सेंटेंस? हैव आई like stopped living in Jaipur, I am still living in Jaipur? Quickly tell me, am I still living in Jaipur or I have stopped living in Jaipur? फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में, ओके, व्हेन आई से आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 20 years, okay, when I say I have lived in Jaipur for 20 years, what is the message here? Have I stopped living in Jaipur or am I still living in Jaipur? देखो आप जब कंपेयर करोगे ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगी वो ये है that there is a see difference between the first sentence and the second sentence. When you say I have lived in Jaipur for 20 years, okay, I have also mentioned this 20 years. मैंने इसमें ड्यूरेशन भी मेंशन की हुई है. जब ये दूसरा सेंटेंस में देखता हूँ, आई हैव सॉल्व्ड ऑल दी प्रॉब्लम्स, तो देयर इज नो ड्यूरेशन मेंशन, नो ड्यूरेशन. तो गाइस देखो फंडा ये है, व्हेन यू राइट अ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट विदाउट ड्यूरेशन, देन द एक्शन इज कंप्लीट. जब आप अपने सेंटेंस के अंदर ड्यूरेशन नहीं लिखते, देन द एक्शन इज कंप्लीट. बट व्हेन यू राइट द सेंटेंस विद ड्यूरेशन, देन द एक्शन इज नॉट कंप्लीट बट द ड्यूरेशन इज कंप्लीट. ओके, ड्यूरेशन इज कंप्लीट बट नॉट द एक्शन. ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मैं कहता हूं आई हैव exactly okay Vibhor, when I say I have lived in Jaipur for 20 years, that means the 20 years का duration is complete, okay, but I am still living in Jaipur. 20 years का duration is complete but I am still living in Jaipur. तो सबसे फर्स्ट चीज जो हमने यहाँ पे समझी है वो ये है कि जब मैं किसी इवेंट को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखूंगा and I do not mention the duration, that means the action is complete. But the moment I write down the time, I say 20 years, 30 years, 10 years, जो भी मैं टाइम लिखता हूँ, okay, it would simply mean that the duration is complete but the action is not. It will mean that the duration is complete but the action is not. Okay, so two things we have studied. Now let's look at the third aspect. Look at this. He has visited Delhi. He has visited Delhi. ठीक है, he has visited Delhi. तो अब यार यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने कहा he has visited Delhi, तो ऐसा क्यों नहीं कह दिया he visited Delhi? ठीक है, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ ही हैज विजिटेड दिल्ली, तो ये भी एक सेंटेंस है. मैंने आपसे कहा ही विजिटेड दिल्ली, ये भी एक सेंटेंस है. अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि यार ही विजिटेड दिल्ली और ही हैज विजिटेड दिल्ली में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इज इट लाइक विजिटेड, ही हैज विजिटेड दिल्ली दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ही विजिटेड दिल्ली इज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, तो इनमें क्या डिफरेंस है? So guys, the third thing that you observe in present perfect is that you can use present perfect for the actions that still have some lingering effect on the present. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसका आपको लगता है इफेक्ट अभी प्रेजेंट में लास्ट कर रहा है, ठीक है, इफ यू थिंक दैट देयर इज एन एक्शन द इफेक्ट ऑफ व्हिच लिंगर्स इन द प्रेजेंट, दैट एक्शन इज आल्सो रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, तो ये जब मैंने लिखा ना ही हैज विजिटेड दिल्ली, जब मैंने ये लिखा ना कि भाई ही हैज विजिटेड दिल्ली, ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो ये आ रहा है दैट the effect of his visiting Delhi is still continuing in the present. Okay, so that means the effect of the action still lingers in the present. Okay, now this is something that we will understand as time goes on. ठीक है, बट बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिनका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में लास्ट करता है. ठीक है, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं और वो सही होता है. ठीक है, तो एक्चुअली दोनों ही सही है. ही विजिटेड दिल्ली भी सही है. ओके, इन दिस केस इट सिंपली मीन दैट इट्स एन एक्शन ऑफ द पास्ट दैट हैपेंड इन पास्ट, खत्म हो गया. और जब मैं कहता हूँ ही हैज विजिटेड दिल्ली, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. इट मीन दैट विजिट दिल्ली पहले किया था बट द इफेक्ट ऑफ दैट विजिट स्टिल लास्ट. ओके, सो सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट, some sort of like you know the effect of that visit still last till present. Okay, तो दोनों ही सही है. ठीक है, so you can use both of them and like both of them are actually correct, no problem with that.
Okay, now let's understand the last wala point through this example. Okay, the sentence is the British have invaded India in 1752. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कहा the British have invaded India in 1752. This sentence is wrong. You know why? Because the moment you say 1752, okay, this is a past ka time. This is a time of past. Now you cannot use present perfect when you've already mentioned a time of past. So this becomes wrong because you can see have invaded is present perfect, लेकिन यहाँ पे मैंने past का एक time mention कर दिया, इसका मतलब ये action past का है जो past में होके end हो गया, ठीक है? So obviously the lingering effect of this action cannot continue till present, right? Okay. Yes, Nachiket, I would answer your question as well. Okay, I would answer your question as well. ठीक है, मैं आपका question answer करता हूँ अभी. ठीक है. So अभी हम ये दोनों example देख लेते हैं. The British have invaded India in 1752. If I look at this example, what do I mean? I mean that British have invaded India, but the moment I say 1752, it becomes a time of past. अभी पास्ट का टाइम हो गया तो उसका मतलब आई कैनॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे से हैव हटा दूंगा एंड आई वुड कन्वर्ट दिस इनटू इन्वेडेड एंड इन्वेडेड इन इटसेल्फ इज योर पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, तो बस सेकंड फॉर्म यूज कर लो, सेंटेंस सही हो जाएगा, द सेंटेंस बिकम्स करेक्ट. ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस का क्या फंडा है? द एनकाउंटर्स हैव स्टार्टेड सिंस संडे लास्ट. ओके, द एनकाउंटर्स हैव स्टार्टेड सिंस संडे लास्ट. अभी गाइस ये सही है, दिस वन इज करेक्ट, this one is correct. Okay, and let me tell you the reason why this one is correct. देखो, when you say since Sunday last, when you say since Sunday last, तो how many of you know that okay since का meaning क्या होता है? देखो since का meaning पता है क्या होता है? Since का meaning होता है till now. Since means अभी तक, till now. ठीक है, एक example समझाता हूँ. For example, when I say I have been studying since morning. I have been studying since morning. Okay, so when I say I have been studying since morning, it means that morning से लेके अभी तक. ठीक है, मतलब अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ और morning से मैंने start किया था पढ़ना. ठीक है, so when I say I have been studying since morning, okay, that means since implies that the action is still going on. Okay, because since basically means till now. Till now का मतलब अभी तक वो काम चल रहा है. अब अगर ये चीज आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अभी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलेगा. जैसे ही आपने कहा ना सिंस संडे लास्ट, तो इसमें एक मैसेज हमें मिल गया कि यार ये काम ना अभी भी चल रहा है. अभी ये काम अभी भी चल रहा है, दैट मीन्स दिस इज स्टिल गोइंग ऑन. इफ दिस इज स्टिल गोइंग ऑन, देन देयर आर टू थिंग्स दैट कैन बी डन. आई कैन से दैट आई कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड आई कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट. पता है क्यों? Because present perfect can be used for those actions that started in the past and they are still going on. Guys, I'm again repeating this. If there is an action that started in the past and is still happening, अगर कोई ऐसा action है जो past में start हुआ था और अभी भी चल रहा है, in those actions you can use present perfect. ये बिल्कुल सही होता है. तो आपने जब ये कहा the encounters have started since Sunday last, it simply means that it started on Sunday and they are still going on, right? And they're still going on. This is also correct. Okay, and we can see that the reason is that since means till now, and because it is still now, that means the action started in the past, it's still happening. So this sentence is perfectly okay. Okay, okay, ठीक है. तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हमें. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया. यस नचिकेत, आई कैन सी योर क्वेश्चन एंड लेट मी क्लैरिफाई दैट क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, तो उसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. Okay, so guys, there's one question that I have been asked. Okay, so let me answer that question. Okay, Hem Gupta, thank you very much if you're a big fan. देखो, Nachiket has asked one question and let me clarify. Okay, so Nachiket, yes, you are absolutely correct. So Nachiket, you are absolutely correct. When you say I have visited Delhi, ठीक है, so can it mean that it was a recent action? Absolutely. ठीक है, हाँ ये मैंने mention नहीं किया. अगर आप ऐसा कहते हो आई हैव विजिटेड दिल्ली, तो इसका एक मीनिंग हो सकता है इट्स अ रीसेंट एक्शन. इट कैन आल्सो मीन
that it's not a recent action, it's an action of past but an effect with an effect on present. तो दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है. व्हेन यू से आई हैव विजिटेड दिल्ली, इट कैन एक्चुअली मीन बोथ दी थिंग्स. इट कैन मीन दैट इट्स अ रीसेंट एक्शन एंड इट कैन ऑल्सो मीन दैट इट्स एन एक्शन ऑफ द पास्ट विद एन इफेक्ट ऑन प्रेजेंट. ओके, दोनों सही है, बिकॉज जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना दोनों मीनिंग्स को कवर कर देता है. जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना दोनों मीनिंग्स को कवर कर देता है. प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो या तो मीनिंग ये हो जाएगा कि दिस इज अ रीसेंट एक्शन, क्योंकि रीसेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, या मीनिंग ये हो जाएगा दैट इट्स एन एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट बट हैज अ लिंगरिंग इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट. ओके, so both the meanings are covered. Okay, so yes, Nachiket, that meaning is also covered when you write this sentence in present perfect. दोनों justify हो सकते हैं, both of them can be justified. ठीक है, तो गाइज आई होप यहां तक समझ में आ गया. प्रेजेंट परफेक्ट is perfectly clear. Okay, so so you can see this, you can see this slide. Okay, you can see this slide. First sentence and second sentence, let's compare both these sentences. Let's see कौन सा सही है कौन सा गलत है. First sentence, technology has opened new frontiers for us. Okay, so what we have is has opened. Okay, technology has opened new frontiers for us. So that is has plus V3. Okay, technology has opened new frontiers for us. This is correct. Why this is correct? Because in this case, what you're actually saying is that the lingering effect of those frontiers which were opened in the past is still on. Is still on. Second वाले पे आते हैं. Technology has opened new frontiers in 2015. अभी देखो यार गाइज, यहाँ फंडा क्या हो गया. यहाँ क्या हो गया कि आप ना ये नहीं बोल सकते कि लिंगरिंग इफेक्ट अभी भी लास्ट कर रहा है, क्योंकि तुमने क्या किया कि हमें टाइम मेंशन कर दिया. टाइम मेंशन कर दिया, टाइम ऑफ पास्ट. ठीक है, so that becomes wrong. So you can say when you mention any specific point in time in past, any specific point of time of past, आपने कोई सा भी past का timing mention कर दिया, you have mentioned any specific point of time of past, then you can't use present perfect. तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा. then you can't use present perfect. ठीक है, फिर आपको past indefinite use करना पड़ेगा. ठीक है, okay, so you cannot mention that point of time, because the moment you mention a past ka point, the moment you mention a past ka point, the sentence becomes wrong. Then it has to be written in past indefinite. Okay, that means second form आपको फिर use करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई option आपके पास नहीं रहेगा. ठीक है, so the only option that is right is technology opened new frontiers for us. You cannot say in 2015. Okay, that becomes wrong. Okay, chalo. So have a look at these words. Okay, have a look at these words. So you have words like recently, already, yet, so far, etc. So when you see these words, recently, already, yet, so far, etc. So when you look at these words, okay, always understand that these words always go with present perfect. Okay, so for example, I have already done my work. So I've already done my work. Okay, have done. So have done is nothing but present perfect. Okay, and you can see that I've used the word already. Okay, he has joined the company recently, so you can see the word recently. Okay, so recently ka matlab it's a recent action, so again you have has plus joined. So has joined is present perfect. Okay, so this sentence is also a sentence of present perfect. Okay, he hasn't arrived yet. Now yet is basically used in negative sentences, but again this also indicates present perfect. तो तुम्हें जो चीज याद रखनी है वो ये कि whenever you use these adverbs recently, already, yet, so far, whenever you see these terms, okay, the sentence is always written in present perfect. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना. ठीक है, look at the example. I have eaten 3 burgers since I came. Okay, okay, Vibhor, what is perfect tense? Perfect tense का देखो meaning क्या होता है. Vibhor has asked this question that what is perfect tense. Perfect, seen what those functions are. ठीक है, so I hope you can identify those functions. Okay, okay, so when you have has have plus v3, that is present perfect. When you have had plus v3, that is past perfect. ठीक है, तो has have plus v3 होगा तो present perfect होता है.
when you have had plus V3, that is past perfect. Okay, so guys, this is like this. What is perfect tense? Perfect tense का मतलब perfect tense means V3 form. Perfect tense means V3 form, third form of the verb. Has have में V3 आ रहा है, present perfect. Had में V3 आ रहा है, past perfect. Has have plus V3 कहाँ use होता है? We use it in recent actions. We use it for actions that happened in the past with a lingering effect on present. We also use it for those actions that started in the past and still going on. ठीक है? वहां पे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, अभी हमने एग्जांपल में समझा. ठीक है, नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड पास्ट परफेक्ट. ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के जो तीन मेन फंक्शंस थे, ठीक है, जो तीन मेन रोल्स थे वो हम लोगों ने देख लिए. ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दोस थ्री रोल्स, and I hope all of you know now exactly how to identify present perfect. Present perfect simply means has have plus v3. Okay, and past perfect means had plus v3. ठीक है, चलो. So I think इतना समझ में आ गया, and you can also have a look at these key terms. Moving on to the next slide. So now we have present perfect continuous. Now we have present perfect continuous. ठीक है, present perfect continuous का देखो मीनिंग क्या है. Present perfect continuous का मीनिंग क्या है? What is present perfect continuous? First of all, look at this format. Has, have, been, v1 plus ing. This form. Has, have, been plus v1 plus ing. जैसे ही तुम्हें ये फॉर्मेट दिखता है, has, have, been, v1, ing, the moment you see this format, has been happening, have been happening, okay, have been doing, has been doing, so whenever you see this format, this is the general format. This is the general format. The moment you see this general format, has, have plus been plus verb plus ing, you know exactly the sentence that you're looking at is a sentence of present perfect continuous. ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट है, has have plus been plus v1 plus ing, so this is your present perfect continuous. ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट. तो एक कंफ्यूजन तो हमारा क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट क्या है. व्हाट इज द फॉर्मेट? वी हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, v1 the main verb and ing. So the moment you see has have plus been plus v1 plus ing, I know that okay, this is a sentence of present perfect continuous. So at least that much is clear, right? आगे चलते हैं. Where do you use present perfect continuous? कहाँ पे use करें? Where do you use present perfect continuous? ठीक है, so guys, any action that started in the past and still continuing, any action that started in the past and still continuing is written in present perfect continuous. ठीक है, so look at the first example. I have been living in Delhi for 5 years. This means the person started living in Delhi 5 years back and he's still living in Delhi. तो यार कोई सा भी एक्शन है पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी भी चल रहा है, कोई सा भी एक्शन है, any action that started in the past is still going on, any action that started in the past is still going on is present perfect continuous. So you can see यार ये present perfect continuous है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, look at the second example. Okay, you can see the example, I am doing the work since an hour is wrong. ठीक है, और फिर जो सेकंड वाला है I have been doing the work for an hour is correct. ठीक है, तो रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो बंदा 1 घंटे से काम कर रहा है तो 1 hour इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ ड्यूरेशन. एंड वी नो दैट ड्यूरेशन के लिए हम लोग सिंस यूज नहीं करते, फॉर यूज करते हैं. सो यू कैन सी दैट द सेकंड सेंटेंस में आई एम यूजिंग फॉर द ड्यूरेशन, सो दैट इज वन एरर. सेकंड, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं 1 hour से काम कर रहा हूँ, तो काम कब स्टार्ट हुआ? The work started one hour back, right? The work started 1 hour back. So अभी 1 hour से वो काम चल रहा है. ठीक है, it started 1 hour back and is still going on. Okay, it started 1 hour back and still going on. That means I have to use present perfect continuous. तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? I have been doing the work for an hour. I have been doing this work for an hour. Okay, so that becomes the correct sentence. Okay, so this wala last wala sentence, I have been doing this work for an hour, is the right version. ठीक है, अभी एक चीज ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैं यूज कर सकता हूं फॉर द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. आई कैन आल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. दोनों यूज हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं एक ना कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसको मैं बाकी समझा बाद में दूंगा. ठीक है, होता क्या है कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स व्हिच आर नॉन एक्शन वर्ब्स, एंड नॉन एक्शन वर्ब्स के केस में यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू शो सच एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन, राइट? ठीक है, सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. अदरवाइज दोनों आपके यूज हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन.
Okay, so guys, have a look at this. I have been living in Delhi for 5 years, तो ये सही है, ठीक है. फिर I have been doing the work for an hour, ये सही है, ठीक है. अच्छा, ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है. आगे चलते हैं. Okay, so guys, coming to the questions. Okay, so we have seen all all four types of present tense. Present indefinite we saw, present perfect we saw, present continuous we saw, present perfect continuous we saw. Right. So now what we have on the screen are some questions. Now let's have a discussion on these questions. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके, so I think there is some lag in the video, I can sense that. So I'm going to look at the answers. You just tell me what should be the answer for the first question. Okay guys, what should be the answer for the first question? Tell me that. First question, what should be the answer? Okay, Vatsal says B option. Okay. Haji, anyone else who can tell me what should be the answer? Sankalp says B option. Okay, so shall we discuss? Okay, let me explain this. Okay, guys, so this is a very easy question, and as you can see, in this case, I have written every Saturday. Every Saturday means that it's a regular action. Regular action implies it's a sentence in present indefinite. Present indefinite means that यहाँ पे आपका V1 या V5 आना चाहिए. Obviously, the sentence का subject is principal. Principal is singular, and because principal is singular, it should be holds. Okay, so this is the answer. We need present indefinite in the first question. Okay. Vibhor, I hope समझ में आ गया होगा. ठीक है, regular action है. Regular action means present indefinite. Present indefinite means V1 or V5. The answer is B option, holds. ठीक है, very easy question. चलो, next question पे आते हैं. Let's move on to the next one. Okay, so guys, tell me the answer for the next question. I'm looking at the chat. Let's see. Next one, what should be the answer? Second question, guys, what should be the answer? Second one. Second question. Okay, shall we discuss the second one? Anyone? Okay. Okay, Swatsal says A option. Okay. Guys, second question. Chalo, let me take this for discussion. Okay, Vibhor says C option होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. Kashish says A option. Okay, Vibhor says C option. Okay, Sankalp says A option. Sankalp Mathur says A option. Okay. So guys, the answer to the second question, Nachiket, A option. Absolutely, absolutely. Okay. The answer to the question is A option. They have been busy with the work. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा. यू हैव टू गो इन फॉर ईदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, सो द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. लास्ट 2 आवर्स, अभी 2 घंटे से काम चल रहा है. ठीक है, 2 आवर्स से काम चल रहा है. 2 आवर्स से काम चल रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं. मैं सेंटेंस के अंदर आई कैन गो इन फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और आई कैन गो इन फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि दोनों के मीनिंग एक ही होते हैं कि काम आपका पहले स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है. राइट, सो द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. That means I cannot use continuous tense because the work started 2 hours back and still going on, right? So it should be they have been busy with the work for the last 2 hours. Okay, so guys, यहाँ पे R की जगह क्या हो जाएगा? Have been. Okay, so yes, okay, most of you have answered the question correctly. Okay, we follow the traffic rules since our childhood. We follow the traffic rules since our childhood. Okay, so guys, what should be the answer in this? We follow the traffic rules since our childhood. What should be the answer in this?
Third question. Okay, Sankalp says A option. Okay. Okay, you can also type the correct answer. What should be the correct answer as well? Okay, Sankalp says A option. Uh, Anyone else who can tell me the answer to this question? क्या होना चाहिए? Chalo, let me discuss this. So this third question should be we have been okay. We have followed कह सकते हो आप, or you can say we have been following. Okay, so this should be we have followed, or you can also use present perfect continuous. We have been following the traffic rules since our childhood. Okay, yes, absolutely. Vatsal, Vibhor, Kashish, Parashar. Okay, correct answer. Good. Okay. I have worked in at this company for 5 years and I intend to stay here until I retire. Okay, so in this case, guys, what should be the answer for the fourth question? Fourth question का क्या answer होगा? Fourth one. Okay, Bhumika Purohit, A option. Okay. Guys, anyone else? Fourth one. What should be the answer? क्या लग रहा है? Fourth question. Okay, yes, Sankalp A option. A option. Okay. Ashish Parashar A option. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, absolutely correct answer. Okay, Bhumika, Sankalp, Vibhor, Kashish, correct answer. It should be okay. The answer is I have been working at this company for 5 years and I intend to stay here until I retire. Okay, so I have been working. So that is present perfect continuous. Okay, Nachiket, correct answer. Fifth question is an interesting one. Okay, I have the same car for more than 10 years, but I'm thinking about buying a new one. Okay. Okay, Bhavik, correct answer. Nachiket, correct answer. Vatsal, correct answer. Vibhor, correct answer. Kashish, correct answer. Okay, all of you have given the correct answer. Good, good, good. Okay. Uh, After this, we're going to take the past tense. I think that would be something new because I think ये वाला तो concept आपको clear हो गया. Yes, Nachiket, that is correct. Absolutely correct. Okay, so guys, look at the fifth question. I have the same car for more than 10 years, but I am thinking about buying a new one. Okay, question number fifth. Question number fifth. Okay, fifth A option. Okay, Sankalp, can you suggest me the answer to this question? What should be the answer? Like obviously, the option is A. Okay, Vibhor Kulshresht, correct answer. Vatsal, correct answer. Sankalp, correct answer. See, the point is that when I say I have the same car for more than 10 years, but I'm thinking about buying a new one, that means the person has owned the same car for more than 10 years. तो मुझे यहाँ पे जो option है, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा I have had the same car for more than 10 years. Absolutely, Vibhor. Okay, so that is the answer. I have had the same car for more than 10 years, where have had is basically present perfect. And why do I use present perfect? Because I can see that the main verb is have, which cannot be converted into ing form because it's a non-continuous verb. So I use present perfect I have had, जिसका basically meaning होगा कि मैंने 10 years से वो कार own की और अभी भी मेरे पास वो कार है, ठीक है? So which means that like I have owned that car for 10 years and I still have the car, ठीक है? Okay. So that is the correct answer. So let me tell you the rest two options so that we are not short on time for the other topics. Okay, because I can see that okay most of you have understood the topic. So अपन next topic पे चलते हैं. So the sixth question is we are following these guidelines every day. Every day is obviously a regular action. Regular action का मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए indefinite, present indefinite. So it should be we follow these guidelines. We follow these guidelines, right? So that is the answer to sixth question. And seventh question, they have been living here since the last 5 years. So obviously last 5 years is duration. Last 5 years is duration, and because last 5 years is duration, okay, I cannot use since because since is used for point of time, so it should be they have been living here for the last 5 years, so the answer is for. Okay, so guys, this is like a very basic exercise on present tense. Okay, and I think all of you have understood the concept. Okay, next वाले पे चलते हैं. Okay, yes, Nachiket, Bhumika, correct answer, very good. Okay, so moving on to the past indefinite. Okay, let's move on to the past indefinite. So guys, listen to this. How do I identify in a sentence the sentence is past indefinite? सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि verb कौन सा है. Second form.
Whenever you see second form of the verb, okay, you know exactly that the sentence is in past indefinite. So action that happened in the past, मतलब जब आप सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज करोगे तो वो एक्शन पास्ट में होके पास्ट में ही खत्म हो गया. इट इज नॉट कंटिन्यूइंग टिल प्रेजेंट. इट स्टार्टेड इन द पास्ट, it got done in the past, right? Okay, so when you have past indefinite, we refer to an action that started in the past, got done in the past. And you always look for such words that indicate time of past. जैसे कि yesterday है, तो yesterday means कि obviously ये action past का है. Last night, last week, last month, last year, the other day, the other morning. So whenever you use these terms like yesterday, last night, last week, last month, last year, okay, कभी भी आपको ऐसे terms दिखते हैं, you exactly know that okay, this sentence is going to be of past indefinite, and past indefinite means I use second form of the verb. So he came yesterday, so that is came is second form. He arrived last week, so that is second form. In both these sentences I use second form of the verb because obviously this is an action of the past that happened in the past, got done in the past. Okay, so the action like happened in the past, and you can always look at these terms, easy to identify. Okay, I hope you got this. These are the actions that happened in the past, right? Acha, what else can happen in past indefinite? Dekho, when you have routine actions of the past, so guys, when you have routine actions of the past, regular actions of the past, habitual actions of the past, those routine, regular, habitual actions of the past can also be expressed with second form of the verb. That is also correct. So when I look at this sentence, for example, the first sentence is I went to school by bus every day. तो इसको देखो यहाँ पे क्या mentioned है, every day. So this is the adverb that we have used, every day. Every day means it's a regular action. Every day means that it's a regular action. Again, you look at this. Rahul never made a mistake. So you look at this adverb never. So again, never means that it's an adverb of frequency, and it shows a frequency. तो एक certain frequency से आप उस काम को कर रहे हो. जो तुम्हें चीज ध्यान रखनी है वो पता है क्या है? Past indefinite can be used for one-time events that happened in the past. Past indefinite can also be used for regular actions of the past. दोनों में use हो सकता है. It can be used for both. Okay, it can be used for one-time event. It can also be used for an action that happened in the past, and those actions were regular events, right? ठीक है. Okay. तो दोनों के अंदर यूज हो जाता है. ठीक है, तो अभी आप देखो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि रेगुलर एक्शंस है. ठीक है, ऑफ द पास्ट ऑब्वियसली. Okay, of the past. Okay, so just look at these words. Okay, always, daily. अभी इन वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान रखना बिकॉज ऑब्वियसली फिर ये एग्जाम के अंदर आपके आ सकते हैं. ठीक है, सो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है वर्ड्स को क्योंकि रेगुलर एक्शंस ऑफ पास्ट है. ओके, है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी अगर आप पास्ट टेंस में इन वर्ड्स को यूज करते हो तो. ठीक है, so have a look at these words. So you have words like never, you have words like every day, you have daily, then you have every month, every year, once a week, once a month, once a year. Okay, on all these cases, in all these cases we use past indefinite when you have actions expressed in the past, okay, with these words. Okay, because they can express and like they can express the regular actions of the past. Okay, so that is also one thing that can happen. Okay, going on. अब आती है एक नई चीज एंड दैट इज अनफुलफिल्ड विशेस एंड like the sort of things that we can say that are imaginary situations. अभी देखो इसमें क्या होता है, when you talk about imagination, generally those imaginations are expressed by certain specific words. For example, present tense के अंदर मैंने एक sentence में if use कर दिया, तो if का obviously मतलब है imaginary हो रही है. कंडीशनल में भी होता है बट if is also used for imagination. मैंने आपसे प्रेजेंट टेंस में बोला आई विश, तो आई विश इज इमेजिनेशन. मैंने आपसे बोला एज इफ, तो एज इफ इज इमेजिनेशन. मैंने आपसे बोला एज दो, तो एज दो इज इमेजिनेशन. ठीक है, अभी तुम्हें जो चीज ध्यान रखनी है ना, पता है वो क्या है? जैसे ही प्रेजेंट टेंस में इमेजिनरी सिचुएशन आती है तो V1 को V2 में कन्वर्ट कर दो, सिंपल.
एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है. फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस सेंटेंस, आई विश आई वर रिच. तो अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा आई विश. तुम्हें समझ में आ गया, इमेजिनेशन है. इमेजिनेशन में क्या नहीं आ सकता, प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता. तो तुमने क्या किया, तुमने उस सेंटेंस के इज एम आर को विच इज बेसिकली V1 फॉर्म कन्वर्ट कर दिया वर में, विच इज बेसिकली द V2 फॉर्म. सो वेरी सिंपल, व्हाट यू डू whenever you see a situation of imagination, whenever you see a situation of imagination in present, you just convert V1 into V2. And the moment you do that, the sentence goes in past subjunctive, and V2 in this case is not actually simple past tense or past indefinite, this is past subjunctive. तो गाइज यहाँ पे ना ये फंडा यार बड़ा इंपॉर्टेंट है. होता क्या है कि प्रेजेंट टेंस की इमेजिनेशन के लिए V2 फॉर्म यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. बट जो सेकंड फॉर्म होता है ना, that second form that we use to show imagination of the present is not exactly a tense, it's basically a subjunctive. ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस की इमेजिनेशन है तो उसे सेकंड फॉर्म में लिख दो, लेकिन वो सेकंड फॉर्म जो होता है ना वो टेक्निकली टेंस नहीं होता, दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज पास्ट सब्जेक्टिव. सो यू हैव टू ऑब्जर्व सच हिंट्स. जैसे अभी सेंटेंस के अंदर देखो, इस वाले सेंटेंस में ही बिहेव्स एज दो, तो obviously this is imaginary. So when you have imagination, you convert V1 into V2. So as you can see that I have used second form of the verb, so that is correct. ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, when you have these verbs like is, am, are, okay, and you convert V1 into V2 because you want to cover imagination, never use was, always use were. ठीक है, irrespective of the subject involved, irrespective of the subject involved, you have to use were. Okay, so is, am, are को जब convert करोगे ना to show imagination, you have to use were. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, इफ आई एम रिच. ठीक है, इफ आई एम रिच. नाउ सम पीपल माइट आस्क दैट ओके, एम को मैंने कन्वर्ट किया तो मैं वॉज भी कर सकता हूँ ना, सेकंड फॉर्म तो वॉज भी होती है. ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्टिव मोड, पास्ट सब्जेक्टिव, यू नेवर यूज वॉज. ओके, द V1 टू V2 कन्वर्जन इज ऑलवेज फ्रॉम इज, एम, आर टू वर. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को वर यूज करना है. इंस्टेड ऑफ सेइंग इफ आई एम रिच, आई वुड सिंपली से इफ आई वर रिच. ओके. Okay, then remember this that these sentences, it is time, it is high time. Okay, in all these cases also we use your second form of the verb. Okay, और उसका रीजन यही होता है कि ये सारी की सारी सिचुएशंस भी इमेजिनेशंस होती हैं, आपकी इंटेंशंस होती हैं, दे आर नॉट रियल सिचुएशंस. So whenever you see such phrases, it is time, it is high time, it's about time. मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, it's about time. In all these cases also we use second form of the verb. Okay. So moving on to the past continuous. Past continuous simply means the actions of the past which were continuing. Like for example, he was studying yesterday. So that was an action of the past that was continuing in the past. So that is one thing we all know. कोई ongoing action की बात करते हो आप जो past में हुआ था, तो उसमें past continuous आता है. ठीक है. Past continuous का format क्या होता है? Was, were plus V1 plus ing form. ठीक है. So ये भी काफी easy है. Then past continuous is also used for obsessive habits, compulsive habits. ठीक है, अब ये चीज ना थोड़ी सी नई चीज है. व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्सेसिव और कंपल्सिव हैबिट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्सेसिव और कंपल्सिव हैबिट्स, ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली यूज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो ऑब्सेसिव और कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ एनी सॉर्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज ऑलवेज शाउटिंग व्हेन ही वाज हियर. नाउ लाइक व्हाई एम आई यूजिंग ऑलवेज शाउटिंग? ठीक है, क्योंकि ऑलवेज के साथ तो शाउट आना चाहिए था वैसे, राइट, बिकॉज ये तो रेगुलर इवेंट है. So how is it possible that I'm saying he was always shouting? Now guys, this is one you can say exception sort of thing in English, that when you have a obsessive or compulsive habit, continuous tense gets allowed. ठीक है, तो यार अगर तो कोई ऑब्सेसिव या कंपल्सिव हैबिट का कोई फंडा अगर तुम्हें लगता है ना किसी सेंटेंस में है, सो यू कैन एक्चुअली यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दे आर एक्चुअली राइट. ओके, सो यू कैन नॉट से देन दैट दीज आर रॉन्ग, राइट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. वैसे आता नहीं क्वेश्चन इस पे, बट देन दिस इज आल्सो वन थिंग दैट यू कैन ऑब्वियसली नो, राइट. मूविंग ऑन टू द पास्ट परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द पास्ट परफेक्ट. अभी देखो पास्ट परफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर रिलेटिव कंप्लीशन. It always shows relative completion. That means when you have first event followed by the second event,
and the first event completes before the second event, then the first event is written in past perfect. Past perfect means it is written in had plus v3, and the second event is written in simple past. सिंपल पास्ट कह लो या पास्ट इंडेफिनिट कह लो, ठीक है. जो सेकंड इवेंट होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, दैट इज v2 फॉर्म, दैट इज second form. Okay, so when you have two events, the first event completes and the second event happens after that. Only the first event is written in past perfect, the second event is written in past indefinite. ठीक है, और ये actions ना back to back होते हैं, right? So when two actions happen one after the other, we can notice certain conjunctions also. Conjunctions कौन कौन सी आती है? Conjunctions जो generally आएंगी first और second event को जो connect करेंगी, conjunctions before, after, okay, when, by the time, etc. But the most important conjunctions that connect the first event to the second event are these three conjunctions: before, after and when. तो जैसे ही आपको past tense में ना ये दो conjunctions, तीनों conjunctions दिखती है, like the moment you see these three conjunctions before, after and when, the moment you see these three conjunctions, always go and see which is the first event that gets completed before the second, and the first event that completes is written in past perfect. ठीक है, सो जो फर्स्ट इवेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा ना उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है. सेकंड इवेंट हैज टू बी रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म दी वर्ब. ठीक है, सो आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा है, बड़ा इजी है. आई होप समझ में आ गया होगा. ओके, मूविंग ऑन. ठीक है, सो यू कैन सी these three sentences. Before he left, before he called, I had left. तो पहले क्या हुआ? Obviously the person left, so we can see had left is past perfect, and the event that happened बाद में, ठीक है, that is written in second form, he called. So called second form है, had left आपकी past perfect है. ठीक है, तो ये आपका सही हो गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. The movie started after we had arrived. ठीक है, हमारे आने के बाद मूवी स्टार्ट हुई. तो फर्स्ट क्या हुआ काम? मूवी स्टार्ट हो गई. ठीक है, सॉरी, पहले क्या हुआ? ठीक है, पहले हम लोग आए. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट? We arrived. So this is the first event. As you can see, the first event is written in had plus v3. Now this event happened first, and what happened after that? The movie started. You can see started is second form of the verb, so I have written it here. Okay, so very simple. Third example देखते हैं. By the time we reached, the movie had started. So by the time conjunction है, it's a subordinating conjunction. ठीक है, अभी मेरे पास दो clauses हैं. तो एक clause तो है we reached, तो आप पूछो कि पहले क्या हुआ? तो obviously movie start हो गई. ठीक है, by the time we reached, the movie had started. So the action that happened पहले, that is first event. तो फर्स्ट इवेंट को मैंने किस में प्लेस कर दिया? हैड प्लस v3 में. तो ये यहाँ पे हैड प्लस v3 आ रहा है. द मूवी हैड स्टार्टेड एंड वी रीच्ड के अंदर दिस रीच्ड, दैट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दिस इज योर सेकंड फॉर्म. तो ये भी सही है. ठीक है, सो दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट and the main clause is written in had plus v3, so that is your past perfect. Okay, so guys, simply speaking, when you have two events of the past happening back to back, the first event gets completed pehle and the second event happens after that. The first event only is written in past perfect, the second wala is written in past indefinite. Okay. Now coming to the third aspect of past perfect. So guys, अभी तक जो हमने चीज समझी वो ये थी कि had plus v3 is used for relative completion. अभी एक फंडा और है. Okay, अभी एक फंडा और है. Had plus v3 is also used for imaginary past. Now this is also called as the funda of third conditional, or in many books they write it the closed conditional. अभी इसमें होता क्या है? Basically conditional के अंदर भी अभी मैं आपको बताऊंगा, but just to give you an idea, it's very simple. Okay, what you actually do, you imagine something of the past. You imagine a past that never happened. आप एक ऐसी चीज की इमेजिनेशन कर लो जो कभी हुई नहीं. ठीक है, तो जब आप इमेजिन करोगे ना, ठीक है, जो इफ क्लॉज बनेगी, in that if clause, which is also called as the subordinate clause, use had plus v3 to show that imagination of the past. अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक तो इमेजिनेशन होगी और एक इमेजिनेशन का कॉन्सिक्वेंस होगा. ठीक है, so when you start imagining the past that never happened, that imagination is had plus v3 and the consequences would have plus v3. ठीक है, let me repeat this. When you imagine something, the imagination that comes after the if conjunction is had plus v3 and the main clauses would have plus v3. Okay, look at this example. Look at this example, guys. If I had studied, I would have passed. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता. ठीक है, तो obviously this is imagination of past.
क्योंकि हमें पता है कि वो पढ़ा तो नहीं, obviously he had not studied, so this is imagination of the past. Now because it's imagination of the past, you can see if clause has had studied का देखो मीनिंग क्या हुआ, this is past perfect, and then you have main clause में you have would have past, that is would plus have plus v3. And as you can see, this is the rule also, this is the concept, that imaginary past that is written in if clause would always have the format if clause को किस में लिखोगे आप लिखोगे had plus v3 में, जो उस imagination का जो consequence है which is actually the main clause, ठीक है, जो main clause है, ठीक है, उस main clause को आप किस में लिखोगे, आप उसमें लिखोगे models के अंदर you use would slash could plus have plus v3. So guys, this is the context of what we call as the closed conditional or the third conditional, and this covers the whole concept of imaginary past. Okay, so कभी भी imagination की बात होगी ना past tense में, तो ये फंडा ध्यान रखना, if clause comes with had plus v3 and the consequence of imagination comes with would have plus v3 or could have plus v3 depending on the situation. ठीक है, so this is also covered. Okay, चलो moving on. Right, past perfect continuous. Now the only thing about past perfect continuous is that whenever you write something of the past but it is written with duration, that sentence has to be written past perfect continuous. तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पास्ट टेंस की कोई चीज है जो आपने मेंशन की लेकिन उसके साथ आपने ड्यूरेशन भी मेंशन की है, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस देखो आप, आई सॉ यस्टरडे दैट राहुल हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. There is a point in past when you notice Rahul. Okay, so there's a point in past when you notice Rahul. So when you notice Rahul yesterday at a certain point of time, he was already playing. That means the action was already ongoing. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने past continuous क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि एक चीज समझना, past continuous में ना ड्यूरेशन नहीं आती. Past continuous is never written with duration. Whenever you have duration, whenever you have duration of the event that started sometime back and was ongoing when you mentioned the event in the past, the duration ensures that you write the action in past perfect continuous. तो इस सेंटेंस को अगर मैं बिना बिना ड्यूरेशन के लिखता तो आई कुड हैव रिटन इट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सपोज करो कि मैंने आपसे कहा राहुल वॉज प्लेइंग हॉकी, राइट. तो गाइज अगर मैं सिर्फ इतना सा बोलूं राहुल इज प्लेइंग हॉकी, राहुल वाज प्लेइंग हॉकी, तो ये सही है क्योंकि ड्यूरेशन नहीं लिखी मैंने, ठीक है. सो इट वाज एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, इट वाज अ टेम्पररी एक्शन. Temporary actions which were with that were happening in past, ongoing actions, temporary actions को हम लोग past continuous में लिख देते हैं, तो ये सही हो गया. बट इसमें एक फंडा है, अगर मैं इसमें एक ड्यूरेशन अटैच कर दूं, राहुल वाज प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर, ठीक है, एंड लेट्स से, अब ऑब्वियसली अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कब 1 घंटा, व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम, ठीक है, जब मैंने उसको कल देखा तो 1 घंटे से खेल रहा था, ठीक है. तो अभी मैंने एक चीज चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे ना ड्यूरेशन मेंशन कर दी, मैंने लिख दिया फॉर एन आवर. अभी पता है ये फंडा चेंज हो जाएगा पूरा. अभी यहाँ पे क्योंकि ड्यूरेशन आ गई ना, तो अब आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट राइट इट इन पास्ट कॉन्टिन्यूस नाउ बिकॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस में यू कैन नॉट मेंशन द ड्यूरेशन. So now because you mentioned the duration, so now it has to be changed into past perfect continuous. So it becomes Rahul had been playing. Okay. Okay. So this is the most basic use of past perfect continuous. और भी होते हैं uses, but obviously we are short on time, so I would not get into the complex things. Okay, so guys, this is one thing that you should always keep in mind. Okay, I hope ये समझ में आ गया duration वाला फंडा. Okay, so just keep that thing in mind and never use past continuous with duration. That is one thing. Okay, so now let's move on to the questions. Okay, so guys, you can see some questions on the screen. So these questions are basically based on past tense. ठीक है, तो इनको अपन डिस्कस करते हैं. Let's discuss these questions one by one. Okay, so let me start with the first question. I'm looking at the chat. Let's see how many of you answered the first question correctly. Okay, first question correctly. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आई एम लुकिंग एट द चैट. यू पीपल टेल मी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आंसर? First question, guys.
आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, Vibhor says B option. B option. Nashtiket says B option. Okay, okay. Vatsal says D option. Kashish says B option. Okay. Okay. Sankalp says D option. Okay. Go on. Anyone else, guys? अभी देखो, लक्षिता says B option. Bhavik says D option. B option. B option. Bhavik says B option. अभी देखो सबका wrong हो गया. पता है यार, देखो बहुत सिंपल सी चीज अभी डिस्कस की थी ना अपन ने. When you use these phrases, it's time, it's high time, it's about time. We always use the second form of the verb. Look at the sentence. Second form आ तो रहा है, started आ रहा है ना. क्या प्रॉब्लम है? सेकंड फॉर्म है तो सही. ओके, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी रिटन इन व्हाट यू से पास्ट सब्जेक्टिव. ओके, दिस इज बेसिकली like this is just an intention, this is just the whims and fancies of a person. Okay, so you've already written it correctly. ठीक है, और कंसेप्ट क्या था कि आप जब सेंटेंस को इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम से स्टार्ट करते हो, एंड द क्लॉज दैट फॉलोज इज ऑलवेज रिटन विद सेकंड फॉर्म इन द मेन वर्ब. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म तो आ रहा है, नो एरर. The answer is no error. Only Vatsal has answered the question correctly. Okay, so that is no error. Okay, so reason समझ में आ गया? I hope you have understood the reason. Okay, so this is already second form. Okay, so the answer is correct because it's time, it's high time, it's about time. We write the sentence in second form because इसका actually meaning पता है क्या होता है? आप actually कह रहे हो कि भी अब time आ गया कि अब तुम काम करने लग जाओ. तो ये ना कोई ये कोई real action नहीं है. This is just the intention of a person. This is just the thought process of a person. When you talk about intentions, imaginations, thought processes, things that you wish, things that you believe should happen, okay, those contexts are not covered by tenses, they are covered by subjunctive. And in this case, to express the imagination in the present, we use past subjunctive. Past subjunctive is second form of the verb. Second form of the verb is already mentioned, so this sentence is absolutely correct. The answer is no error. Okay, so I think you got the logic, right? Chalo, second example पे आते हैं. Let's move on to the second question. So guys, I'm looking at the answer. Let's tell me the answer for the second question. Second question, guys. Anyone who can tell me the answer to the second question? Okay, Kashish says C option. Okay, Bhumika says C option. Aji, anyone else who can answer this question? Vatsal says C option. Okay, shall we discuss? करें discuss? ठीक है, संकल्प से सी ऑप्शन, लक्षिता से सी ऑप्शन. तो गाइज अभी देखो, ये अभी ये वाला भी रॉन्ग हो गया, अभी ये वाला भी रॉन्ग हो गया. देखो मैं इसका रीजन बताता हूँ. एक्चुअली देखो फंडा पता है क्या हो रहा है अभी, जैसे तुम ना के टेंसेस को दिमाग में लगा के सोच रहे हो. देखो अब इसमें ना एक बहुत बेसिक चीज है जो तुमने मिस आउट कर दी. बहुत बेसिक चीज. अब देखो एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना. मैंने यहाँ पे लिखा हैड ही. नाउ डू यू रियली थिंक दैट इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस? नो गाइज, इट्स नॉट अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस यू हैव द हेल्पिंग वर्ब कमिंग बिफोर द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब. अभी फंडा क्या होता है देखो, व्हेन आई से helping verb coming before the subject and then subject followed by main verb, ये जो फंडा होता है ना, ठीक है, ये आपका बेसिकली होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. इंटेरोगेटिव का मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने आपसे कहा आर यू इंटरेस्टेड एंड देन आई प्लेस अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो यू कैन सी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, main verb, and you can see in an interrogative sentence the helping verb comes before the subject and subject itself is followed by the main verb. यही होता है फंडा. ठीक है, अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता. ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है. ठीक है, when you write a sentence, when you write a sentence in like है ना your direct speech, direct, ठीक है, आप उसको कोट नहीं कर रहे, तो वो आपका जब आप है ना, जैसे मैंने आपसे नरेशन में कहा कि मैं एक डायरेक्ट स्पीच है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लाइक आर यू इंटरेस्टेड, अब जब आप इस चीज को कोट करोगे तो वो फिर क्वेश्चन नहीं रह जाएगा. ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई वर इंटरेस्टेड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं रह गया, वो फिर आपने किसी को कोट किया है. ठीक है, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लाइक द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, राइट. तो अभी यहाँ पे ना एक क्वेश्चन नहीं है भाई, क्योंकि क्वेश्चन होता है ना तो लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क लगाता, फुल स्टॉप नहीं लगाता. ठीक है, अभी यहाँ पे ना एक क्वेश्चन नहीं है.
अभी क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ऑब्वियसली इट्स नॉट अ क्वेश्चन, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे हैड ही नहीं होगा, ये ही हैड होना चाहिए, इट शुड बी ही हैड, ओके, इट शुड बी ही हैड, ओके, ओके गाइस, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, इट शुड बी ही हैड, ओके, एक जस्ट वेट फॉर सम टाइम। Okay, so guys, we have the screen again. Okay, so I think there was some problem. Okay, so guys, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, third one. Okay, just have a look at the third question. Okay, let me put my laptop on the charger. I think the device is losing charge. ठीक है, तो एक बार इसको third question को देखो. Let me put this on charge. Okay, have a look at the third question and look at the fourth question also. ठीक है, third और fourth दोनों observe करो, फिर अपन इसको discuss करते हैं. Look at both question, third and fourth. Okay, and then I will look at the chart. Okay, so let's see how many of you have answered this question. हाँ जी, तो यार थर्ड ऑप्शन का मुझे दिख रहा है आंसर, आई कैन सी थर्ड ऑप्शन, संकल्प से सी ऑप्शन, ओके, थर्ड इज सी ऑप्शन, ओके, थर्ड के फोर्थ इज बी ऑप्शन, कशिश से थर्ड का सी ऑप्शन होना चाहिए, ओके, okay, so guys, let me answer the third one at least. Okay, third, acha, fourth ka B option. Okay, Sankalp says fourth ka B option. Okay, so guys, this is the answer. Very simple question. Ram reached his village and he found that the news of his arrival preceded him. तो यहाँ पे देखो दो चीजें हो रही है. He reached his village and the news of his arrival has reached before him. टू एक्शंस है, न्यूज का आना और उस बंदे का आना. तो पहले एक्शन कौन सा हुआ? न्यूज का आना, ऑब्वियसली, राइट, ठीक है, न्यूज का आना. दैट मींस व्हेन यू हैव टू एक्शंस इन पास्ट टेंस, द वन दैट कंप्लीट्स पहले इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट. सो अभी तुम्हें क्या करना है, प्रीसीडेड किस में, दिस इज लाइक पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको कन्वर्ट कर दो पास्ट परफेक्ट में, हैड प्रीसीडेड, ओके, had preceded, खत्म, ठीक है. So you have two actions. The पहले वाला action is put in past perfect and the second action is already in past indefinite. So the answer is C option and I think many people have answered this question correctly. Kashish correct answer, Vatsal correct answer, Bhavik correct answer, Bhumika correct answer. ठीक है, फोर्थ वाले का भी आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आंसर दी क्वेश्चन करेक्टली. ओके, या फोर्थ वाले में ना एक चीज मुझे समझाओ, ये बी ऑप्शन क्यों मार्क कर रहे हो तुम लोग? बी ऑप्शन क्यों मार्क कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन फॉर बी ऑप्शन गाइस? दिस इज वेरी सिंपल. देखो, in the fourth question you're talking about something that is going to happen in future, and we all know that we can use present indefinite to talk about something that happens in future. अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा?
अगर मैं किसी एक्शन को फ्यूचर में करने वाला हूँ, ठीक है, और वो एक्शन पहले से प्री शेड्यूल्ड है, तो मैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं आपको। मैंने आपसे कहा आई लीव टुमारो, आई लीव टुमारो, तो आई लीव टुमारो इज परफेक्टली ओके बिकॉज बात तो फ्यूचर की हो रही है, बट एनी एक्शन ऑफ फ्यूचर कैन ऑलवेज बी रिटन इन V1 और V5, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाई? बिकॉज इट्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड। अभी कोई चीज मैंने पक्की पहले से कर ली तो मैं उसको लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आओ, द बुक व्हेन हिट्स द मार्केट, so in this case you are talking about the book hitting the market, but obviously I'm using present indefinite। present indefinite का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट हैज टू बी सीन एंड अकॉर्डिंगली द वर्ब हैज टू बी मैच्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? द बुक, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा? हिट्स, तो आंसर क्या होगा? हिट्स, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ओके guys, you got this? Okay, in the fourth question the problem is that the sentence is written, the first clause is written in your present indefinite. In present indefinite you have a singular subject, singular subject requires singular verb, singular verb means that I should use hits। ठीक है, तो अभी मैंने हिट वहां पे हिट लिखा हुआ है, हिट तो गलत है, हिट्स हो जाएगा। ठीक है, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू हैव आंसर्ड, लाइक है ना, सेकंड वाले में बी ऑप्शन वगैरह आंसर हो रहा है। सेकंड वाले का किसी ने भी आई थिंक सही आंसर नहीं दिया, फोर्थ वाले का मतलब। ठीक है, चलो move on to the let's move on to the fifth question, guys। Fifth question, I'm looking at the answer। Fifth question, tell me the answer to this fifth one। फिफ्थ क्वेश्चन गाइस, आंसर बताओ जल्दी से, फिफ्थ क्वेश्चन का क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन क्विकली। ओके, so I can see the answer। Vatsal says fifth is C option। ठीक है, okay, Sankalp says fifth is C option। Guys, anyone else would like to answer this question? Kashish says fifth is C option। Okay, okay, anyone else would like to answer the fifth one? What is the answer to the fifth question? Bhumika says fifth is C option. Vibhor says B option. Nachiket says C option. Bhavik says B option. Okay, so guys, I think most of you are already replying C option, so that is the correct answer, because this is this is something like, you know, it's such a reported speech। आप ना अभी पास्ट की बात कर रहे हो। बिफोर गोइंग ऑन लीव ही हैड कमिटेड दैट ही विल रिज्यूम आफ्टर 3 days। तो कब की बात हो रही है? दिस इज एन इवेंट ऑफ द पास्ट, एंड यू कैन नॉट यूज विल शैल इन द पास्ट, यू हैव टू यूज वुड इंस्टेड ऑफ विल। ठीक है, तो विल शैल कैन को आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज इट इन पास्ट टेंस, यू कैन नॉट यूज इट इन रिपोर्टेड स्पीच, यू हैव टू use would instead of will, right? So the answer is C option, that is he would resume after 3 days। Okay, sixth question. Let's come to the sixth question. Tell me the answer to sixth one. I will get you the book when I will go to Delhi। Okay, I will get you the book when I go to Delhi। So you can see there's a conjunction when, and this conjunction is joining two clauses। Okay, I will get you। Okay, and the second clause is I will go to Delhi। Okay, so tell me the answer to this question। Okay, so Lakshita says C option होगा, ठीक है। Okay, Sankalp says C option। Okay, okay, Vatsal, Sankalp, Kashish। Okay, guys, all of you have given the correct answer, so that is the answer। Okay, because you cannot have, okay, you cannot have actually, you cannot have two future tenses in the same sentence। Okay, when you talk about two future tenses in the sentence, what you do, that the one that happens first is written in present indefinite, because present indefinite can talk about future। So you can see that in this sentence I've used future tense twice। Okay, I will get and I will go। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो सेकंड वाला फ्यूचर है ना, जो एक्चुअली पहले वाला इवेंट है, सी ऑप्शन। ओके, इट शुड बी आई विल गेट यू द बुक व्हेन आई गो टू दिल्ली। ओके, सो द आंसर फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। The answer for sixth question is option C। Okay,
That should be when I go to Delhi. Okay, seventh question. Let's come to the seventh one. Okay, tell me the answer to the seventh one. Okay, seventh question. I came before you came. What should be the answer to this one? Okay, Bhumika. Okay, Bhumika says C option. Okay, Sankalp says A option. Okay, Vatsal says A option. Okay. Uh, Atharv says came is not required. Okay, so Atharv, just tell me if came is not required, what should I use? Okay, Bhavik says C option. Okay, chalo, let me explain. Good. Okay, Nachiket says C option. Okay, so most of you are either replying C option or you are replying A option. तो पहले जो है देखो ये समझ लो कि पहले फर्स्ट इवेंट कौन सा हुआ बिकॉज क्लियरली वी नो दैट व्हेन देयर आर टू इवेंट्स दैट हैपन बैक टू बैक इन पास्ट टेंस द फर्स्ट वाला इवेंट गोज इन पास्ट परफेक्ट एंड द सेकंड वाला इवेंट दैट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स गोज इन पास्ट इंडेफिनिट तो गाइस इतना तो फंडा हमें पता है ठीक है अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ तुम मुझे बताना एक नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है व्हाट हैपेंस बिकॉज आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस रॉन्ग ओके एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है तो बहुत डिफिकल्ट तो कोई क्वेश्चन है नहीं एवरी क्वेश्चन इज ऑफ स्नैप लेवल राइट ठीक है सो लुक एट दिस मैंने आपसे कहा I left before he came. I left before he came. ठीक है तो इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करो बिफोर मैंने कंजंक्शन यूज किया है ठीक है तो व्हाट हैपेंड पहले आई लेफ्ट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट ही केम so what is the first event I left and what is the second event he came so अभी हमें क्या करना है फर्स्ट इवेंट को पास्ट परफेक्ट में डालना है तो I left gets converted to I had left right ऐसा ही होगा and obviously the second event is already in the second form of the verb so there's nothing wrong in that right so guys I can see that when I use before as a conjunction I can very simply see that the part that is before like that is like I left in this case okay is converted into past perfect क्योंकि first event है और उसके बाद में जो event हुआ वो second form में है क्योंकि वो past indefinite में जाएगा वो second event है तो अभी अपने example पे आते हैं अभी तुम मुझे एक चीज बताओ पहले क्या हुआ I came before you came तो भैया पहले कौन आया I came ठीक है तो ये बंदा पहले आया अब ये बंदा पहले आया इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट इवेंट अभी फर्स्ट इवेंट है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा हैड प्लस वी थ्री हैड प्लस वी थ्री का मतलब क्या हुआ इट शुड बी आई हैड कम बिकॉज दोज ऑफ यू हु डोंट नो दिस ओके द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम इज ऑल्सो कम okay so what are the three forms of the verb come okay so you have come v1 you have came that is v2 and then again you have come which is v3 ठीक है so come came come ठीक है so मुझे तो यहाँ पे had plus v3 चाहिए so I need come okay so it should be I had come before you came तो guys आंसर तो आपका A ऑप्शन हो जाएगा ठीक है अभी इसमें कई लोगों ने B ऑप्शन और C ऑप्शन भी आंसर किया है ठीक है so I think now you understood okay so Vibhor correct answer Vibhor you have answered correctly Vatsal correct answer Sankalp correct answer okay and the plan is very simple just look for the first event then look for the conjunction and the first event is to be placed in past perfect the second event can obviously be in simple past tense or past indefinite because Atharv, you have to understand one thing that we use third form in past perfect and third form for the verb come is again come ठीक है तो अथर्व का क्वेश्चन है कि भाई जो सेवंथ क्वेश्चन है इसमें कम क्यों आया है ठीक है तो अथर्व उसका रीजन ये है दैट when you have two events that happen back to back okay normally we use conjunction like before when after to connect those two events the event that gets completed pehle okay is written in past perfect and past perfect is had plus v3 and past perfect is had plus v3 now the thing is that the v3 of verb come is also come so you can see atharv okay atharv I think atharv ही नाम है हाँ atharv okay so atharv आप देखो यहाँ पे v1 come है second form came है and the third form is again come and because third form is again come okay the had plus v3 is basically past perfect so it should be had come
Okay, I hope you got it right. Okay, so next का question का answer I can see A option, A option, A option. Sankalp says A option, Vatsal says A option, Kashish Parashar says A option. Okay, absolutely. All three of you are correct. Sankalp correct answer, Vatsal correct answer, Kashish correct answer. The answer to the eighth question is the patient had died because obviously patient की death पहले हो गई. Past perfect यहाँ पे आएगा, had died और doctor बाद में आया. ठीक है. भूमिका इफ यू राइट आई केम बिफोर यू केम वो गलत हो जाएगा. ओके भूमिका क्वेश्चन इज कि अगर मैं ऐसे लिख दूं आई केम बिफोर यू केम तो वो सही है क्या? नो दैट इज रॉन्ग बिकॉज बिफोर का मतलब दीज आर टू बैक एक्शंस एंड देन यू हैव टू चेक व्हिच इज द फर्स्ट वन. ओके द फर्स्ट वन इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट. ओके यस भूमिका दैट इज रॉन्ग एब्सोल्युटली दैट इज रॉन्ग. ठीक है और तभी कंफ्यूजन होता है क्योंकि ग्रामर के अंदर जनरली ये केम वाला जो वर्ब है ना बड़ा कंफ्यूज करता है बिकॉज मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि इस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है. ठीक है तो फिर वो कंफ्यूज ही रहते हैं. वो फिर ना पास्ट परफेक्ट के अंदर भी ना केम ही लिख देते हैं है ना. अब वो गड़बड़ हो जाती है क्योंकि केम जो है ना वो थर्ड फॉर्म नहीं होता. द थर्ड फॉर्म फॉर द वर्ड केम इज कम एंड व्हेन यू राइट पास्ट परफेक्ट इट हैज टू बी मेड हैड कम. ठीक है अब बिफोर तुमने कंजंक्शन यूज किया. बिफोर कंजंक्शन का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टू इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट बैक टू बैक. ठीक है द फर्स्ट इवेंट दैट गेट्स कंप्लीटेड पहले शुड बी हैड कम. ठीक है ओके ओके सो ये कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा होता है कंफ्यूजन है ना. ठीक है आई होप ये समझ में आ गया. चलो मूविंग ऑन. ओके so guys now you can see on the screen ninth question and tell me the answer to the ninth one. Okay, ninth question, guys. What should be the answer? Ninth question, guys. What should be the answer? Anyone? Okay, Kashish says C option. Okay, Vibhor says C option. Okay, Vatsal C option, Atharv C option, Sankalp C option, Nachiket C option. Okay, so guys, all of you are correct. I think you understood the question. So this after is the conjunction. This conjunction joins two clauses. Okay, absolutely, Atharv. Okay, the patient died after the doctor came. So you have two clauses. Which one happened first? Okay, obviously the doctor का coming क्योंकि after conjunction का मतलब ये है कि doctor पहले आया और patient की death बाद में हुई. So the event that happens first is kept in past perfect. So it should be the patient died after the doctor had come. तो यहाँ पे वापस से आंसर आएगा the patient died after the doctor had come. ठीक है क्योंकि पेशेंट की डेथ डॉक्टर के आने के बाद हुई. दैट मीन्स डॉक्टर केम पहले and if doctor came pehle that means the clause that mentions doctor should be written in past perfect. Past perfect means had come. ओके विपुर हो सकता है लेकिन तुम्हें वो उतना इजी देंगे तो फिर तुम आंसर भी जल्दी से निकाल लोगे. कम या केम वाले में ना कड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है. तो होता क्या है जनरली जब फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन बनता है ना तो वो केम को ही देते हैं सो दैट दे कैन एटलीस्ट कंफ्यूज दी स्टूडेंट्स. बाकी जो तुम चीज कह रहे हो ना वो भी हो जाएगी. यू कैन सिंपली से है ना लाइक द डॉक्टर विजिटेड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट द डॉक्टर अराइव्ड. ठीक है तो वो तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा बिकॉज वी नो दैट यस द डॉक्टर हैड अराइव्ड तो दैट इज पास्ट परफेक्ट. ओके अथर्व ये नहीं हो सकता डॉक्टर हैड केम ये नहीं हो सकता. The reason why you cannot say had came is because you have the helping verb had. And the helping verb had, okay, helping verbs जो होती है ना has have had, इनके साथ हमेशा ना perfect tense में third form ही जाता है. तो अगर किसी को नहीं पता तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कभी भी आप has यूज करोगे as a helping verb, कभी भी आप have यूज करोगे as a helping verb या had यूज करोगे तो 100% उसमें ना हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ही यूज होगा. ठीक है तो had प्लस V3 होता है had प्लस V2 नहीं हो सकता. ठीक है तो परफेक्ट टेंस में had प्लस V2 कर भी मत देना. इट शुड बी had कम ओनली. Okay, so Atharv, that would be wrong, obviously. Okay. 10th question, let's see. It is appearing to me that you are trying to create troubles. Okay, so Sankalp says 10th question का answer is B option. Okay, so guys 10th question में देखो एक बार what should be the answer. Sankalp says B option. What do you think?
ओके अथर्व, दिस इज लाइक ग्रामर दोनों का मोर और लेस सेम ही रहता है। अभी जैसे ये अभी आपका ग्रामर चल रहा है ना, ये एनमैट में भी काम आएगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर योर स्नैप आल्सो। लाइक ग्रामर इज मोर और लेस द सेम, लाइक एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्व्स वन लॉजिक एंड यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफिकल्टी का दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, so guys, 10th question, what should be the answer for the 10th one? Anyone? 10th one, 10th question. Yes, Vatsal, A option. Okay, so chalo, let me tell you the answer. I think many of you have tried this question. Okay, so guys, the answer is that appear in this sentence is basically a verb that is non-continuous. ठीक है, अभी यहाँ पे हो जाएगा it appears to me, it appears to me. And those of you who have not understood this, okay, let me tell you, appear is same like look. Okay, like for example, you appear confident. तो appear का जो मीनिंग होता है वो होता है लगना, दिखना। ठीक है, सो appear is a non continuous verb, so because appear is a non continuous verb you cannot use it in ing form, so it should be it appears. Okay, 11th question, let's move on to the 11th question. I asked him where was he going but he did not reply. I asked him where was he going but he did not reply. So guys, quickly tell me what is the answer to the 11th question. For the last question, yes, Kashish, Vatsal, Lakshita, Vibhor, all of you have given the correct answers. Yes, Vibhor, that is present indefinite, absolutely. Okay, that is present indefinite अगर आप किसी स्टेटिव वर्ब को यूज करते हो, ठीक है, या किसी आप क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब को भी यूज करते हो ना, ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहते हैं उसको। ठीक है, तो इट अपीयर्स इज बेसिकली द V5 फॉर्म दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो डाउट्स अबाउट इट। तो 12th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। 12th क्वेश्चन गाइस, 12th व्हाट शुड बी द आंसर? 12th वन। ओके, लक्षिता से सी ऑप्शन 12th का, ठीक है। ओके, ही वाज टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 आवर्स, सॉरी 12th वाला यार मैंने गलत पूछ लिया क्या? हाँ, 11th वाला, सॉरी 11th। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। ओके, सो 11th क्वेश्चन का वत्सल सेज बी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन का संकल्प सेज बी ऑप्शन, राइट? ओके, Athar says B option. Okay, so guys, yes, that is the answer. It should be I asked him where he was going, because obviously it's not an interrogative sentence. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहीं लगा हुआ नहीं है। दिस इज बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसका मतलब आप किसी बंदे की बात कर रहे हो, बता रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब यू डोंट हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। आप सिंपली लिखो वेयर ही वाज गोइंग, so that is the normal format. You have the subject followed by the helping verb followed by the main verb. Okay, so this is the normal format of a sentence. Okay, you don't have an interrogative sentence here, right? Okay. Yes, अथर वो 11th वाला ही मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था। अथर वो लाइक आई एक्चुअली सेड 12th वन, वो बोलना मैं 11th ही चाह रहा था। ठीक है, गलती से मैं वो बोल गया 12th। ठीक है, 12th वन, 12th A option. Okay, so Vatsal says 12th A option. Guys, anyone else quickly you can tell me the 12th one, 12th A option. ठीक है, ठीक है। Kashish says A option, Sankalp says A option. Okay. So yes, that is the answer. Let me tell you the answer. Okay. So 12th question, he was taking. This part should be converted to he has been taking. So guys, why? Because this is present perfect continuous. Present perfect continuous. Present perfect continuous क्यों? Because this action is already going in for 2 hours. So this action is already going in for 2 hours. So 2 hours of काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है. So the action is already going on for 2 hours. Okay, so this is present perfect continuous. So it should be he has been taking exercise for 2 hours. So perfect answer A option. And Sankalp, Kashish, Lakshita, Atharv, correct answer, guys. All of you have answered correctly. Okay, let's move on to the 13th question. When he reached station, 13th question. When he reached station, he was told that the train already left. 13th question, guys. What should be the answer? 13th one. 13th. 13th question, guys. Anyone? 13th. What should be the answer? Okay, 13. Kashish says C option. Okay.
Vatsal, 13 C option. Sankalp, 13 C option. Lakshita, 13 C option. Absolutely. When he reached station, he was told that the train had already left. Okay, so this should be past perfect. So the answer is C option. Most people, like almost all of you have answered the question correctly. Okay, so that is perfect. C option. Absolutely correct. Okay, 14th question पे आते हैं. Let's come to the 14th one. Okay, last question. Atharv, Bhumika, Vibhor, Lakshita, Sankalp, Vatsal, Kashish, all are correct. Good guys. Okay, all have given the correct answer. So moving on to the next question. She will not come unless I shall invite her. What's the answer to this question? क्या आंसर होना चाहिए? What should be the answer to the question 14th? 14th question guys, क्या आंसर होगा 14th वाले का? What should be the answer to the 14th question? 14th, okay, Lakshita B option होगा. Okay, Atharv B option, Kashish B option. ठीक है, ठीक है. सब B option मार्क कर रहे हो. भूमिका says B option. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, चलो, good, 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 good. Okay, can anyone tell me what is wrong in the B option quickly? Okay, correct answers. Sankalp correct answer, Kashish correct answer, Atharv correct answer, Vatsal correct answer, Bhumika correct answer. Okay, so all of you have given the correct answer. So it should be she will not come unless I invite her. She will not come unless I invite her. So you don't need this shall here because you cannot have two future tenses in the same sentence. So this is the answer. The peon rang the bell before I reached the school. 15th A option. I can see 15th A option. Vibhor says B option. Okay. तो 15th क्वेश्चन में देखो यार ये चीज ऑब्जर्व करना. यू हैव दिस कंजंक्शन बिफोर, राइट? बिफोर के पहले कौन सा इवेंट हुआ? द पियोन रैंग द बेल. एंड बाद में कौन सा इवेंट हुआ? आई रीच स्कूल. So which event goes in the past perfect, the पहले वाला action? So what is the first action that happened? Okay, the pion rang the bell. Now how do I convert this rang which is second form into the past perfect? ठीक है, तो मुझे पता है क्या करना है. मुझे rank को ना V2 को convert करना पड़ेगा had plus V3 में. So it becomes guys the peon had rung the bell. Had rung. So guys, you can see यहाँ पे भी बहुत confusion हो सकता है because you have to understand that ring, rang, and rung. The third form for the verb ring is rung. Okay, so यहाँ पे because past perfect हमें first वाले event में डालना पड़ता है, so it should be the peon had rung the bell. The peon had rung. The peon had rung the bell. Okay. Moving on to the last question, 16th one. If you would have come to me, I would have helped you. Okay, 16th question, guys. 16th one, 16th. क्या आंसर होगा? 16th question. 16th question. Anyone? 16th one. What should be the answer? Okay, Kashish correct answer. Vatsal correct answer. Vibhor correct answer. Okay, Lakshita correct answer. Bhavik correct answer. Okay, so Kashish, Vatsal, Vibhor, Lakshita, and Bhavik. Okay, Sankalp also. Okay, so guys, all of you have given the correct answer. Kashish, Vatsal, Vibhor, Lakshita, Bhavik, and Sankalp. Okay, so all of you have given the correct answer. Okay, Bhumika Purohit, yes, correct answer. Bhumika, correct answer. So guys, this is a context of imaginary past. Okay, so you have a situation where you have imaginary past and then you have the consequence of the imaginary past. Okay, so first you have the imagination that goes in the if clause. So this is the imaginary past. Okay, so that means this is a case of what you call as third conditional. ठीक है, imaginary past में हम क्या use करते हैं? Had plus V3. ठीक है, so it should be if you had come to me. Okay, so it should be would have हटा दो, convert it into past perfect, or you can say had plus V3. This is imaginary past, so this is had plus V3, and the consequences I would have helped you. Okay, so obviously this part is correct.
because this is imagination of the past, so the problem is with the A option, and it should be changed from would have to had plus V3. Okay, had plus V3 का मतलब क्या हुआ? Had come. Okay, had plus V3 का मतलब क्या हुआ? Had come. If you had come to me, if you had come to me, I would have helped you. If you had come to me, I would have helped you. Okay, so that is how we do this question. Okay, so guys, so that was about tenses. Okay, so we discussed all the possible aspects of present tense. We also discussed all the possible aspects of past tense. Okay, so we have covered present tense, we have covered the past tense. Now, what we are left with? What we are left with? We are left with your conditionals, which I will take in a separate session. I would take it on the app, I think, ठीक है, because app के अंदर थोड़ा सा questions वाला format जल्दी better आ जाता है, because like there's no lag in the app. Okay, on the YouTube there's a lot of lag. Okay, so I will be taking that session, so you will like I will notify you. Okay, so you people, those of you who are not following me on the app, okay, can obviously follow me on the app. Okay, on the app we have a smoother experience. So guys, I would put the link. Okay, so you can connect with me on the app also, and I will be taking the conditionals and the future tense in the app in the next session. ठीक है, तो वो next session का मैं notification आपको दे दूंगा. I would put it on the group. I would also put it in the comment section. Those of you who have recently seen my sessions, I would recommend that you go in the past sessions and you see in the comment box I have left the link of the app. So उससे ना उस link को follow कर सकते हो. You can follow that link and you can connect with me on the app itself, and you will find that the experience in the app is much better, and the interaction is also real time, and like I really enjoy taking sessions there. ठीक है guys, so यार ये दो topics थे, बहुत important topics थे, and I hope you people have been able to understand these two things. Okay, one is present tense and the other is past tense, and now we are left with two more, that is your conditionals and future tense. फ्यूचर टेंस में तो वैसे ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है. कंडीशनल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यस आई विल टेक अ 1 hour का सेशन ऑन द ऐप वेयर आई विल टेक कंडीशनल्स एंड द फ्यूचर टेंस का थोड़ा बहुत पार्ट व्हिच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट. ओके, so that is how it is guys. That will be all for today's session. Do follow me on the app. Okay, and when you for download the app, so you have to use the HSync का code HNSINGH. ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि जो भी ऐप जो तुम डाउनलोड करोगे उसमें ये कोड यूज करना, and you can access the app, like you can access the content free. Okay, so it's not only for the paid content, you can actually use this code for any free content that I put it on the app. Okay, and I will see you there. Tomorrow also I have one session that is already pre-scheduled on the app. Okay, so today is 7th. Okay, so tomorrow we have a session at 4 o'clock. तो कल आप अगर ऐप पे आते हो तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो at 4 o'clock. ठीक है. Okay guys, so that was nice being with all of you, and I will see you in the next session. I will see you on the app tomorrow. So that's it. Okay, so thank you very much. Sir, also I sent you a question on WhatsApp. Take that session too. Yes, yes, Vibor, I'm going to take that session. Don't worry. So there is going to be a session on verbal analogy. There's going to be a session on verbal analogy. ठीक है, so बस मैं उस चीज को एक बार प्लान कर लेता हूँ. ठीक है, so थोड़ा सा बस टाइम का मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था कि बट प्लान कैसे करना है, क्या क्या करना है. So yes, I would be definitely taking that session on verbal analogy. Don't worry. Verbal analogy is one of the very important topics that we have, right? ठीक है, so वो चीज हम लोग करेंगे. Don't worry about that. Okay. So guys, that is it, and do follow me on the app. तो उसमें कल मेरा सेशन है, ठीक है, 4 o'clock पे, तो उस सेशन के अंदर भी हम लोग फिर मुलाकात करते हैं. ठीक है, चलो. ओके, so thank you very much. See you in the next session. Bye.